So hello students, welcome in this video। और आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो आवर टुडेज टॉपिक इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसमें हम लोग बहुत क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारा कब सॉल्वेबल होता है, कब सॉल्वेबल नहीं होता है, कब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिखता कैसे है। हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो इक्वेशंस, इनफैक्ट दो लीनियर इक्वेशन से मिलकर बना होता है। सो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स में गिवन है। यहाँ पर x एंड y हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स एंड a1 a2 b1 b2 c1 and c2 they all are constants, or you can say that they are numbers. So any two equation which are interrelated and given in this form forms a system of linear equations in two variables. Okay, so two variables यहाँ पर हमारे क्या हैं, x and y। नाउ सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम गिवन होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, वैल्यूज ऑफ x and y which satisfy the given system। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हमारा ये होता है कि कोई भी वैल्यूज x और y की वो इस पूरे सिस्टम को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि इक्वेशन 1 को भी और इक्वेशन 2 को भी। और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज बोथ द इक्वेशंस। सो अगर एक पेयर ऑफ वैल्यू आपने ऑब्टेन किया x और y का जो केवल एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दूसरी इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम उसको सॉल्यूशन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। नाउ अब अगर हमारे पास कोई सिस्टम गिवन होता है, सो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि सिस्टम सॉल्वेबल होता है या नहीं। तो हमारे पास एक नॉमेनक्लेचर होता है कि कंसिस्टेंट सिस्टम। सो अ सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट if system has solution or solutions means अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है और हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके,
सो नाउ हम यहाँ पर अब देखते हैं कि कब हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, यानी उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो है हमारे पास कि सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट से मतलब क्या है, व्हेन द सिस्टम इज नॉट सॉल्वेबल, मीन्स ये सिचुएशन क्या होगी जब हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा सिस्टम का। ओके, सो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस इन दिस केस वी हैव द सिचुएशन ऑफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सो अगेन अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे अगर, तो कंसिस्टेंट सिस्टम से अगर हम शुरू करें तो कंसिस्टेंट सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, व्हेन यू आर हैविंग कंसिस्टेंट सिस्टम, सो जैसा कि हमने देखा दो पॉसिबिलिटी हैं कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है और हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। सो यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी हमारी जो होती है, कब हम कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, सो यूनिक सॉल्यूशन की जो पॉसिबिलिटी है, यूनिक सॉल्यूशन वो हमारा कब होगा, सो यूनिक सॉल्यूशन हमारा होता है व्हेन वी आर हैविंग द रेशियो a1 over a2, दिस रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू b1 over b2। यहाँ पर a1 और a2 and b1 and b2 are same as we discussed in the beginning, means यहाँ पर जो हमारे पास जो ये a1 a2 and b1 b2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगी। जब भी हमारे पास कोई सिस्टम गिवन होगा हमारे पास यहाँ से वैल्यूज मिल जाती है। सो हम रेशो को चेक करेंगे और देखेंगे कि अगर ये रेशो हमारे अनइक्वल है देन वी आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। नाउ सपोज, so this is the case of unique solution. Now when we have infinite solution, so infinite solution का जो हमारा केस होता है वो होगा जब हमारा ये रेशोज इफ दे बिकम इक्वल। ओके, सो बट यहाँ पर फिर हमारी एक रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है कि फिर जो हमारा कांस्टेंट वाला टर्म है दोनों इक्वेशंस में C1 एंड C2, उनका रेशो भी इनके इक्वल आना चाहिए। सो इस केस में हमारे पास जो सिचुएशन होगी वो होगी हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। नाउ इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम की जो पॉसिबिलिटी बनती है, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन की। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपका a1 और a2 का जो रेशो है वो b1 और b2 का रेशो के तो इक्वल होगा, बट बोथ दीज रेशोज आर नॉट इक्वल्स टू C1 एंड C2 का जो रेशो आएगा उसके इक्वल नहीं होंगे। सो जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे पास एक क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यहीं से बन जाता है कि हमारा जो कोई भी सिस्टम हमें गिवन है वो सॉल्वेबल है या नहीं है, या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं या उसके नो सॉल्यूशंस हैं। सो यहीं से हम लोग यहाँ से हम एग्जांपल्स की शुरुआत करेंगे। सो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स, और हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स नाउ। सो लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमें दो इक्वेशंस गिवन है। सो वी आर गिवन अ सिस्टम दैट x plus 2y is equals to 3, and we are also given that 2x plus 3y is equals to 7. Now अब यहाँ पर आपके पास दो तीन तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास आ सकता है कि आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। ओके, सो कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास मीन्स इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि
इस सिस्टम के लिए आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं, ओके, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं। सो हमारे पास सबसे पहले जो हम लोग चेक करते हैं वो हम यहाँ पर अगर आप देखो तो A1 यानी कि पहले इक्वेशन को हम लोग अगर कंसिडर करते हैं, सो द कोफिशिएंट ऑफ विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x in the first equation, that is the value of your A1. So this is coming out as 1. Now B1 will be 2 because this is the coefficient of y in equation 1. आप अगर देखना चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं. You can write this as 1. So this will be the value of A1. This will be the value of B1. Okay. So if you look at this, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलती है वो A1 की वैल्यू 1 मिलती है, B1 की वैल्यू 2 मिलती है. Now coming to the equation 2, so this which is the coefficient of x can be considered as A2 and the coefficient of y is considered as B2. So यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आती है A2 and B2 की, so we get A2 is equals to 2 and B2 is equals to 7. So now you can easily find out A1 over A2. So this is coming out as 1 over 2, while B1 over B2 is coming out as 2 over 7. So from here you can easily see that A1 over A2 is not equals to B1 over B2. So this is the situation when we have, this implies that the given system has unique solution. Or you can also say that the system is consistent. Okay, so the system is consistent. So this is how we can obtain the solution of means we can check the condition whether the given system has solution or not. Now consider the second example. So here we are again given a system, means 3x plus 4y plus 5 is equals to 0 and 6x plus 8y plus 10 is equals to 0. So अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोग बहुत जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास A1 A2 की वैल्यू क्या होती है. सो दिस इज योर A1, नाउ दिस इज योर B1 and this is your C1. Now here I would like to mention a thing, that it is a good practice to write your given equation in this form, means keep your right hand side equals to 0. Means अगर आपको right hand side में कुछ given है, so you have to transfer this towards the left hand side. Now this is our A2 and this will be our B2 and here we are having our C2. So यहाँ से अगर आप वैल्यूज देखो तो क्या मिलेगी आपको, A1 की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 3, B1 जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हमारा 4 और C1 जो है वो आ रहा है हमारा 5. Now similarly if you look at this, so A2 is coming out 6, B2 is coming out 8 and C2 is coming out 10. So यहाँ से अगर आप देखो तो A1 over A2 will be 3/6 and this is coming out as 1/2. Now next B1 over B2 is 4/8 and this is coming out as 1/2.
Now lastly we are having C1 over C2, so this is 5 over 10 and this is coming out 1 by 2. So from here you can conclude that A1 over A2 is same as B1 over B2 is same as C1 over C2. So this is the situation for infinite solutions. So system is still consistent and solutions will be infinitely many. So this is also a consistent system, because any system for which we are having solutions is known as a consistent system. Okay. So now if you consider now the most common type of problems which are frequently asked in the board examination are of this form. So we are taking our next example. So we are having this 2x plus 3y is equals to 4, and the second equation is k plus 2x plus 6y is equals to 3k plus 2. So here we have to find the value of k for which we are having infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Okay. So we know that. Okay. So we know that. पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जल्दी से एक बार a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू देख लेते हैं. So we can write given that a1 will be 2, b1 will be 3 and your c1 will be minus 4. Why we are considering this as minus 4? So okay, so let us discuss, as I told you in the previous example, that it will be a good practice if you convert your equation in the equals to 0 form. So what you have to do, you will obtain from this system, so from this system you can obtain this as 2x plus 3y minus 4 is equals to 0, and we are having k plus 2x plus 6y minus 3k plus 2 is equals to 0. So from here we are having, now from here you can easily obtain the values of a1. So a1 is 2, a2 is k plus 2, both are the coefficients of x. So this is our a1 and this will be our a2, and we are having b1 as 3, c1 as minus 4, b2 as 6, c2 as minus 3k plus 2. So now you can obtain the ratio, और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के करस्पॉन्डिंग k की वैल्यू. ओके, so we are having for infinite solutions, for infinite solutions we know that a1 upon a2 should be
equals to B1 upon B2 and should be equals to C1 upon C2. So this will be 2 over 6. From here you will obtain 2 over 6 is equals to no, this is not 2 over 6. In fact, this is A1 upon A2. So this means we are having 2 over K plus 2 is equals to B1 upon B2. So that is 3 over 6 is equals to C1 over C2. So that is your minus 4 over minus 3K plus 2. So you can cancel both these minus sign and you will obtain this as 4 over 3K plus 2. So now if you equate these two terms, because we are having equality sign in all these expressions, so if you equate these two terms, so you are having 2 over K plus 2 is equals to 1 by 2. So if you multiply or you perform cross multiplication, then you will obtain this as 4 is equals to K plus 2, and this will give you the value of K as 2. Now if you equate the last two terms, so this will give you 4 over 3K plus 2 is equals to 1 by 2. So this will give you 3K plus 2 is equals to 8, and from here you will obtain 3K is equals to 6, or you will obtain K is equals to 2. So here you can see that in both the cases we are obtaining the value of K is equals to 2. So for K is equals to 2, the given system has infinitely many solutions. Okay, so this is how we can obtain the solutions. Means we are, in fact we are not obtaining the solution, we are obtaining the condition under which a given system is consistent or inconsistent or having infinitely many solutions. So this is a very simple procedure. So let us consider one more example. So let us consider the example number 4. So we are having 3x minus a plus 1y is equals to 2b minus 1, and we are having 5x plus 1 minus 2ay is equals to 3b. So जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हम इसे दोनों इक्वेशंस को इक्वल्स टू 0 वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस दैट इफ यू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशंस इन दिस फॉर्म. सो दिस इज a plus 1y minus 2b minus 1 is equals to 0, and from here you will obtain 5x plus 1 minus 2a y minus 3b is equals to 0. So again from here you can easily obtain that your a1 is equals to 3, your b1 is equals to minus a plus 1, and c1 is equals to minus 2b minus 1, and similarly we will obtain the value of a2 as 5, b2 as 1 minus 2a,
and C2 as minus 3b. So again we know that for infinitely many solutions, so for infinite solutions, we know that a1 over a2 should be equals to b1 over b2 is equals to c1 over c2. So this means, this implies that 3 over 5 is equals to minus a plus 1 over 1 minus 2a is equals to minus 2b minus 1 over minus 3b, which will be coming out as 2b minus 1 over 3b. And again, similar to the previous example, if we equate these two terms, means a1 over a2 and b1 over b2, so we will obtain 3 1 minus 2a is equals to minus 5 a plus 1, and from here you will obtain 3 minus 6a is equals to minus 5a minus 5. So this will give you the value as minus a is equals to minus 8, and this will give you the value of a as 8. Okay, and if you equate the last two terms, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, so हमें यहाँ से क्या मिलेगा, in fact not last two terms, in fact first and third term. Okay, so we are equating our first and third term because हम लास्ट टू को भी कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 8 पुट करते हैं, बट हमारे पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट या नोन टर्म है, सो वी आर इक्वेटिंग दिस. ओके, so we are equating these two terms. So we are having 2b minus 1 over 3b is equals to 3 over 5, and this will give you 5 times 2b minus 1 is equals to 3 multiplied by 3b, which further gives 10b minus 5 is equals to 9b, and from here you will obtain that 10b minus 9b is equals to 5, which further gives you the value of b as 5. So this is how we can obtain the values of unknowns. Okay, so a is 8 and b is equals to 5 are the values for which we are having infinite solutions. Okay, so in this video we just understand the method by which we can find out to check the given system as consistent or inconsistent. Okay, and if we are having any unknown involved in the equations, then for what values of unknown we are having infinite solutions or unique solutions or some inconsistency. Okay, so
हम लोग जो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके, so method of solutions, in fact methods of solutions. so उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अगर हमें कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके.